Hello everyone, welcome back to our channel Iconic English. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe. Today we are going to talk about what are phrases and types of phrases. What are phrases, dear? Phrase is a group of words without both a subject and a predicate. Phrases combine words into larger unit that can function as a sentence element. For example, a participial phrase can include adjectives, nouns, prepositions, and adverbs. As a single unit, however, it functions as one big adjective modifying a noun or noun phrase. So, in simple words, फ्रेज एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कोई प्रेडिकेट नहीं होता, इसमें कोई वर्ब होना बहुत ज़रूरी नहीं होता. सिंपल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कुछ भी शो कर सकते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और ये या तो नाउन को डिनोट कर सकते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे? टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में हम जानेंगे कैसे. First type is verb phrase. Verb phrase can refer to the whole predicate of a sentence. I was watching my favorite show yesterday. Or just the verb or verb group was watching. Right? Was watching is itself a phrase, and I was watching my favorite show yesterday is also a verb phrase. Watching, the verb is being done here. Okay. Prepositional phrase. The food on the table looked delicious. A prepositional phrase which has a preposition as its head can function as an adjective, adverb, or even as a noun. So, on the table here in this sentence is prepositional phrase. द फूड ऑन द टेबल लुक डिलीशियस. जो भी फ्रेज होगा वो शुरू होगा एक प्रेपोजिशन से. टू द मार्केट, दिस विल ऑल्सो बी अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. सिर्फ इतना ही हो जाता है फ्रेज. सो कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपियल फ्रेज. Crushed to pieces by a sledgehammer, the computer no longer worked. Or, I think the guy sitting over there likes you. A participial phrase has a past or present participle as its head. Participial phrase always function as adjectives. How? Crushed to pieces या sitting over there, जो भी participial phrase होगा उसकी शुरुआत एक पार्टिसिपल से होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो. अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. और इफ़ ing इज़ मेड टू इट और एडेड टू इट, इट विल बिकम पार्टिसिपियल, प्रेजेंट पार्टिसिपियल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है ये और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है ये. तो अगर ये किसी पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये पार्टिसिपियल फ्रेज है. नाउ इन्फिनेटिव फ्रेज. आई लव टू बेक केक्स. एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ नाउन फ्रेज विद एन इन्फिनेटिव एज इट्स हेड. अनलाइक द अदर नाउन फ्रेजेस, हाउएवर, an infinitive phrase can also function as an adjective or an adverb. I love to bake cakes. इस सेंटेंस में to bake cakes is the phrase here. An infinitive जब हम किसी verb के साथ to ऐड कर देते हैं पहले तो वो एक infinitive हो जाता है. To eat, to dance, to love, ये सब हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं. तो अगर किसी इन्फिनेटिव से शुरुआत हो रही है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा. Now, gerund phrase. I love baking cakes. A gerund phrase is just a noun phrase with a gerund at its head. Here, baking cakes. Baking is the gerund here because it is. What is gerund? First of all, let me tell you, gerund is the formation of noun plus verb. So, it is basically a type of verb that is acting as a noun. Okay.
यहाँ पर लव वर्ब है, बट baking is not a verb here, it is a gerund, it is qualifying this noun. Okay, now appositive phrase, Bob, my best friend works here, or my best friend Bob works here. An appositive single word phrase or clause renames another noun, not technically modifying it. So here appositive phrase is my best friend or my best friend Bob's works here. So this is appositive phrase. इसको हम टेक नाउन भी कह सकते हैं, बट नॉट टेक्निकली दिस इज मॉडिफाइंग अ नाउन, सो वी विल कॉल इट एन एपोजिटिव फ्रेज. नाउ adverbial phrase. An adverbial phrase also has two definitions. Some say it is a group of adverbs, while others say it is a phrase, usually a prepositional phrase that acts as a verb, adverb. So जहाँ पे भी आपको adverb दिखे like very quickly, so it will become adverbial phrase. Adverbial phrases are the type of phrase जो आपको verb की quality बता रहा हो. जहाँ पर भी आपको verb की quality दिखे, a group of words that will be treated as adverb phrase. So that's it with the types of phrases. In case of any queries, you can comment down below. Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.